Good morning, friends. Very good morning. Yes, good morning, friends. Okay. So, friends, if you recall in last session, if you recall in last session, we have completed retirement, noting charges, and renewal. So, we have completed renewal, retirement, and we have almost done discussion of insolvency, right? So, guys, in a insolvency, if you recall, in insolvency, we understood that in case of insolvency, the party become insolvent, party could not pay the full amount, and therefore we have to pass this three entry. We have written that bill is not paid, that is bill is dishonor. So first pass entry of dishonor, that is cancellation of bill. One party become insolvent, so cancel his account from book. So say for example there is A and B. अगर A इंस्टॉलमेंट हो जाता है तो A अपने बुक में से B का नाम कैंसिल कर देगा और B अपने बुक में से A का नाम कैंसिल कर देगा, राइट? देन whatever money received will be debited in cash account and whatever money not received will be debited to bad debts account. Simple. मान लो कि B हो गया इंसॉल्वेंट, सो B को A को रुपीस देने हैं, B has to pay to A, right? And B become insolvent. So say for example from 1 lakh 60,000 B paid, 40,000 B could not pay. So what A will do, here also we understood entry also, cash will be 60, bad debts will be 40, and B's account will be cancelled by 1 lakh. So A received 60,000, but A could not receive 40,000. So whatever not received is a loss for A and it will be bad debts. Now what B will do? Whatever he pay in cash, it will be in cash. And what he could not pay in cash, it will be credited to deficiency account. So guys, this is what we have done last lecture, last 5 minutes, right? I hope you've written this. Can we go further, friends? We have written these 4 points in last session.
Yes, perfect. Okay, then let's start with 7. Let's start with question number 7. Okay, so Mr. D draw the bill, two bills, 6,000 and 10,000. The 6,000 bill is of 2 month and 10,000 bill is of 3 month. This bill were accepted by T, except by T. So we can say D is a drawer. Like this, guys. D is a drawer and T is a acceptor. Like, and now before going further, you are to give entries in the books of D. So we need to write the entries in the books of drawer. In the books of drawer. Okay. So in the books of drawer. Now the first entry. D draw, bill, and T accept the bill. D draw the bill and T accept the bill. 6,000 and 10,000. So two bills drawn by D accept by T, right? So as we discuss, BR, BR 6,000, 10,000 to T 16,000. So 2BR, BR1, BR2, this is BR1, this is BR2. Entry will be BR2 T. BR2 T. First simple entry. Very simple entry. And if you say it, it is done on 1st January 22. So this is done on 1st January 22. Now friend, what next? So till this point, our sum is done. Okay, till this point, our sum is done. Here. Okay. Now on 4/3/22. 4/3/22. Mr. T requests Mr. D to renew the first bill with interest of 18% per annum for 2 months. Mr. D agreed to this proposal.
So guys, till this point, it is a story of renewal. This is the story of renewal, right? Now, if you recall, when we conclude the renewal point, see, this is renewal, what we discussed in last session, right? We write 3 points. First, old bill is cancelled, new bill is issued, and entry of interest for extended period. So 3 points to be remembered. First, old bill is cancelled. So first of all, old bill needs to be cancelled, new bill to be generated, and we need to pass the entry of interest also. 3 points to be remembered when there is a renewal, right? We already discussed this. Now, here, first bill is renewed. First bill. So bill of 6,000. Bill of 6,000. On which date? 4/3/22. So now, friend, what is the first entry? Cancel old BR. Cancel means reverse, right? T is account debited. 6,000. So the entry of BR to T, T to BR 6,000. First of all, entries old bill is cancelled. Old bill is cancelled. Now we need to issue the new bill, but first we will charge the interest. Interest charge. 6,000 rupees bill into 18 percentage. And if you see the month, it is for 2 months. It is for 2 months. Bill is renewed for 2 months. So we will write 2 months interest. It is 180. It is 180, right? Now guys, we are passing entries in the books of D. That is drawer. That is drawer. Now tell me guys, for drawer, for D, he will charge the interest, right? Because he is giving extra time to T. D is giving extra time to T, right? So tell me for D, this interest will be income or expense? Yes, guys. For D, it is income or expense. Sir, he will charge the interest because he is favoring Mr. T. So for him, it is income. For him, it is income. So you can say it is T's account debit to interest. T to interest. 180.
And last entry for is new BR. Last entries of new BR. Okay. Now, if you see the entry, friend, see the narration of question. Mr. T requests Mr. D to renew the first bill with interest 18% for a period of 2 months, and Mr. D agreed to this proposal. So it means, remember very carefully, Mr. T does not pay anything. So Mr. T does not pay interest. Mr. T does not pay any part payment. So nothing will be there, right? Very clear. If you read the question, Mr. T could not pay anything. He just requests for the renewal with interest and cool and calm. Nothing. He doesn't have money. So what logic Mr. D will apply? Mr. D will say, देखो 6,000 का बिल था, 180 का इंटरेस्ट लगा और आपने कोई पार्ट पेमेंट नहीं किया. आपने मुझे कोई पार्ट पेमेंट नहीं किया. So the new bill will be 6,000 plus 180, that is 6180. That is 6180. So 6,000 was the outstanding amount plus 180. So you can say new BR to Mr. T is 6180. So till this point, sum is over. New BR to T 6180. 6180. Yeah. New bill will be of full amount. Perfect. New bill will be of full amount. Perfect. Okay. Let's move further. Okay. On 23/22, Mr. T retired the acceptance of retired. What is the word? It is retire. Which one? 10,000. How much discount is? 100 rupees. Now guys, 10,000 matlab second bill. 10,000 matlab second bill. Tell me friend, what was the date of drawing, month and date of maturity of second bill? Tell me, what is date of drawing, month and date of maturity of second bill? Tell me guys, be fast. नोटिंग चार्जेस क्वेश्चन में नहीं दिया है तो कहां से आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा. और आप चाहो तो कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हो. इट इज एब्सोल्युटली ओके. यस गाइस, सेकंड बिल का डेट ऑफ ड्राइंग, number of month, and according to you, what is date of maturity? What is date of maturity? Tell me. So it is 1/1/22. It is 1/1/22, right? I'm writing here 1/1/22 plus how many months are there? For second bill is 3 months, right? Plus 3 days. So date of maturity of second bill is 4th April, guys.
It is 4th April 1122 plus 3 month plus 3 days 4422. This is date of maturity. But he is paying on which date? He is paying on 20 March 22, right? So I can say T paid before maturity. It is known as retirement. It is known as retirement. Clear, guys? Till this point, clear? Can we pass the entry? Yes. जल्दी पे कर दिया. Perfect. And now, in case of retirement, what we learn in last lecture? Only 1 point. Only 1 point. Only 1 point. Bill is paid with discount and rebate. Bill will be paid with only 1 point, discount and rebate. Right? How much discount rebate given in the question, friend? How much discount and rebate given in question? If you see it, Mr. T retired the acceptance for 10,000. The rebate is being 100. The rebate is being only 100. We are passing entries in the books of D drawer, right? We are passing entries in the books of D, that is drawer, okay? Right? Now tell me, we are passing entry in the books of drawer. So D is receiving money or paying money? Tell me. D is receiving money or paying money? D is receiving money. Okay. Tell me how much cash and bank D will receive. Now, the second BR is of 10,000. It will be reverse. Okay. See here in your first entry. In your first entry, it's a debit. We are talking about this, guys. I'm talking about this. This BR is debit, 10,000. It is paid. So I have to credit this BR by 10,000. Clear? I have to reverse this BR by 10,000. Clear, guys? Now tell me how much money D will receive instead of 10,000. He will receive only 9900. He will receive only 9900. And what rebate will be debited?
100. So bank will be debited 9900. Rebate will be 100. And bill, this bill, BR second bill 10,000 which was debited, it will be reverse. It will be reverse. Simple, guys. So he is receiving money. Yes. Therefore, he will receive less. It will be expense for him. Rebate will be expense for him. Perfect. Yes. Okay. Okay. So we reached up to the last line. Here. Before the due date of renewed bill. Before the due date of renewed bill, Mr. T, who Mr. T become insolvent and only 50 paisa. 50 paisa matlab 50 percentage. 50 paisa matlab 50 percentage can be recovered from him. Can be recovered from bill. So guys, there were two bill. First bill is renewed. Second bill is retired. Now, second bill retired, first bill was renewed, and before the due date of renewed bill, before the due date of renewed bill, Mr. T become insolvent. So guys, first let me know what is the amount of second bill. Let me know. Rebate discount both are same. Don't worry. Tell me guys, what is the amount of second bill? What is the amount of second bill? Tell me guys, what is the amount of second bill? Yes guys, what is the amount of second bill? 6180. 6180. Amount of second bill is 6180. Second bill means renewed bill. I am talking about second bill to pay ho gaya. What is the amount of renewed bill? What is the amount of renewed bill? Second to pay ho gaya, वो तो बात खत्म कर दी हमने. So first and then renewed. The amount of renewed bill is 6180. Mr. T become insolvent. Mr. T become insolvent. Now, as we discuss, when there is an insolvency, we will pass three entries minimum here. Okay. The first one is bill is not paid. So first we need to cancel the bill. First cancel the bill, then cancel the party. Cancel the bill and cancel the party. Now see the smart work, friend. See the smart work. See here carefully, guys. Now this is your BR1 6000. Now this BR is reverse here.
This BR is reverse here. See, this 6,000 is reverse here. First bill, your first bill is reverse. So I can say it is cancelled. This is cancelled, right? Then it's a new BR generated. 6180 new BR generated. Now before the due date of this new BR, what happened? Party become insolvent. Party become insolvent. So now very important three entities I am passing, guys. Insolvency. What first we will do? Cancel bill. Okay. So this bill will be first cancelled. So this entry should be reversed. It's a new BR2T. So we will reverse this entry. This entire entry will be reversed, right? This entire entry will be reversed. Clear, friend? Clear? So this entry is reversed. Bill is cancelled. Bill is cancelled. Bill is cancelled. Now, friend, bill is reversed. Now, party is cancelled with cash and bandits. So, as it is said in question, %50 received and 50% not received, right? 50% received and 50% not received. So, sir, half is received, half is not received. Half is received and half is not received. Half is received and half is not received. So 3090 is cash and 3090 is a bandits. It's a bandits. Half is received and half is not received. Simple. Half is received and half is not received.
Done, guys? Can we go to next question, guys? Half is cash and half is bad debts. Now, friend, in this question number 8, 2 points are important. In this question number 8, 2 points are important. Just understand. Now, the bill is discounted with the bank. The bill is discounted with the bank and then renew. Now, friend, if you recall our entries, what we learn, if you recall the entries, what we learn about the dishonor of bill, right? We understood that if bill is discounted with bank and then cancel or dishonor. Cancel or dishonor. Then drawee will. ड्रॉई विल क्या एंट्री पास करेगा हमने सीखा था ड्रॉई क्या करेगा ड्रॉअर विल पहले ड्रॉअर की बात करेंगे ड्रॉअर विल ड्रॉअर क्या करेगा ड्रॉई का अकाउंट डेबिट करेगा और टू क्या करेगा बैंक करेगा रिकॉल गाइस अगर अगर बिल बैंक के पास है हमने सीखा था कि अगर बिल डिस्काउंट करवा दिया है मतलब बिल बैंक के पास है और बाद में हो जाता है बिल डिसऑनर हमने उस क्वेश्चन में सीखा था कि ए ड्रॉअर और बी ड्रॉई है तो ए बी का अकाउंट डेबिट करेगा और क्रेडिट किसको करेगा बैंक को करेगा बिकॉज बैंक को तो पैसा देना पड़ेगा इमीडिएटली ओके सो हमने सीखा था ड्रॉअर विल पास द एंट्री ड्रॉइंग टू बैंक देखो यहां सेम हो रहा है क्या एंट्री पास की है रीटा टू बैंक रीटा टू बैंक राइट सो रिमेंबर दिस एंट्री वेरी केयरफुली हमने ऑलरेडी ये सीखा हुआ है हमने ऑलरेडी ये सीखा हुआ है अगर बिल डिस्काउंट करवा दिया है तो एंट्री पास करेंगे ड्रॉई टू बैंक इसलिए एंट्री पास की रिटा टू बैंक राइट सो श्रीमन यहां ड्रॉवर है ये ड्रॉवर है और रिटा जो है वो ड्रॉई है क्लियर गाइस फर्स्ट पॉइंट क्लियर वेरी इंपॉर्टेंट टिक करो उसको अपने हिसाब से एस देखो जब पैसा आया था तो हमने बैंक को डेबिट किया था अगर अब होना है डिजो तो बैंक को क्रेडिट करेंगे सिंपल राइट पूरी अमाउंट से डिस्काउंट किया तब बैंक को डेबिट किया था बैंक को पैसा वापस करना पड़ेगा तो बैंक को करेंगे क्रेडिट पॉइंट रिकॉल हो गया फ्रेंड ये पॉइंट रिकॉल हो गया
राइट गाइस? यस। जब हमने डिस्काउंट करवा था तो बैंक को डेबिट किया था बिकॉज हमारे पास पैसे आ रहे थे। अब उसी बैंक को क्रेडिट करेंगे बिकॉज पैसे जा रहे हैं, बैंक को पैसा देना पड़ेगा, राइट? ओके, नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट। सी व्हाट हैपन नाउ। रिन्यू कर रहे हैं, कंडीशन क्या रखा है? 50,000 इमीडिएटली विथ इंटरेस्ट पे करना है, और बाकी के लिए नया बिल 50,000 टुगेदर विथ इंटरेस्ट। तो राइट वेरी केयरफुली, क्या लिखा है यहां? ऑन रिन्यूअल रीटा विल पे 50,000 प्लस इंटरेस्ट immediately. Please write it very carefully, guys. She will pay 50,000 in interest immediately. लिखा गाइस? Immediately. ओके, सो पहले हमने इंटरेस्ट कितना पड़ेगा? 12% के हिसाब से 3 महीने का इंटरेस्ट 50,000 के ऊपर 1500। नाउ फ्रेंड, व्हाट इज दिस 1500? ओके, ये 50,000 कौन सा है? प्लीज राइट, जो अनपेड है। हम इंटरेस्ट किसके ऊपर गिनेंगे? जो भाई साहब ने अभी पे किया नहीं है। तो दिस 50,000 इज अनपेड 50,000 जो उन्होंने पे किया नहीं है। सो दिस एंट्री इज सिंपल, रिटा टू इंटरेस्ट फाइन 1500, व्हाट दिस इज वी नो। नाउ व्हाट शी इज पेइंग, as we discussed, she is paying immediately 50,000 plus interest 1500. Clear guys? This is she is paying immediately. Rita paid immediately, right? So friend, what is the final story? See, 1 लाख का बिल था, हमने 1500 का इंटरेस्ट चढ़ाया, उसने 5100 पे कर दिया। ये बीआर था, ये इंटरेस्ट था, और उसने पे कर दिया। तो अब कितना रहा बाकी का? ओनली 50,000, राइट? सो दिस इज द एंट्री ऑफ 50,000. ओके, सो राइट वेरी केयरफुली फ्रेंड्स। 1 लाख का ओरिजिनल बिल था, उसमें हमने 1500 का इंटरेस्ट ऐड किया, उसमें से उसने 50,000 भी पे कर दिया और 1500 भी पे कर दिया। तो अब कितना बचा? ओनली 50,000 बचा। क्लियर गाइस? ओनली 50,000 बचा। somebody is asking कि हमने बिल को कैंसिल नहीं क्यों नहीं किया? तो डियर, ये मैंने पूरी कहानी क्या समझाई? ये कैंसिलेशन ही तो है, रिटा टू बैंक। ये मैंने पूरी कहानी 3 बार समझाई कि if bill is discounted with the bank and then cancel, we have to write bank. Dear, draw it to bank, it is the entry of cancellation only. ये पूरी कहानी पहले वही समझाई, ये कैंसिलेशन ही आप अगर पढ़ सकते हो, राइट? बट एज बिल डिस्काउंट कर दिया था बैंक में, इसलिए यहाँ रिटा टू बीआर नहीं आएगा, रिटा टू बैंक आएगा। दैट आई एक्सप्लेन वेरी केयरफुली विथ कूल एंड काम।
This is the entry of cancellation. Bill is cancelled. Bill is dishonored. I explained very carefully here. Okay, guys. So now how this 50,000 arrive? I hope it is clear. इंटरेस्ट 1 लाख पे कैसे आएगा? क्यों इतनी सिंपल बात नहीं समझ रहे हो? 50,000 तो वो पे कर रहा है. तो मैंने ये भी आपको बहुत क्लियर बताया, ध्यान नहीं आप लोगों का. अनपेड अमाउंट पे आएगा, मैंने वही बताया. इफ शी इज पेइंग 50,000, यहाँ लिखा भी सही, ऑन रिन्यूअल रीटा विल पे 50,000 एंड इंटरेस्ट इमीडिएटली. अगर 1 लाख में से वो 50 पे कर रही है तो इंटरेस्ट किस पे लगाएंगे? बाकी के 50 पे ही लगाएंगे ना डियर. क्लियर? आई होप नाउ इट इज क्लियर. Both the question regarding cancellation of bill and how interest on 50,000, I think both should be clear now. Both should be clear. $50,000 पे 12% 3 महीने का लिखा ही है. It is 1,500. Somebody is asking how 1,500. Here it is 50,000 12% 3 month. I hope now it is clear, right? Kindly write everything. If you just listen the lecture, take the screenshot and just pics लिया आपने और पढ़ रहे हो, no meaning. You have to write. You have to write everything. Okay. And last entry is about the bad debts that we have learned. So now you can do this question on your own. Now illustration 8 remaining is very easy. You can do on your own. Yes. Somebody is asking where is discount? Discount इसमें कहां से आएगा डियर? डिस्काउंट रिबेट डिस्काउंट रिटायरमेंट में आता है, रिन्यूअल में इंटरेस्ट आता है, तो इसमें डिस्काउंट नहीं आएगा बिकॉज यहाँ कोई रिटायरमेंट नहीं है, यहाँ रिन्यूअल है. पिछले सब में रिटायरमेंट था, देयरफॉर इंटरेस्ट, देयरफॉर डिस्काउंट आया था. यहाँ रिटायरमेंट नहीं है, रिन्यूअल है. आई होप समबडी इज आस्किंग अबाउट डिस्काउंट. नाउ इट शुड बी क्लियर. Clear guys, can we go further? I understand. Okay, thank you. ओ का मीनिंग होता है पैसा देना है. ओ मीन्स लायबिलिटी. ओड मीन्स लायबिलिटी. ओके, रीटा को श्रीमन को पैसा देना है. रीटा ओड मतलब रीटा हैज टू पे. क्लियर? ओके. इसमें 51500 इसलिए नहीं आया बिकॉज उसने 1500 इंटरेस्ट पे कर दिया है. देखो कैश में आ गया, 1500 पे कर दिया है, दैट्स वाई. मैंने कैलकुलेशन दिखाया, अगर आपको समझ में आया हो तो. 1 लाख का बिल था, 1500 का इंटरेस्ट लगाया, बट उसने 50,000 भी पे कर दिया और 1500 भी पे कर दिया. तो उसने टोटल पे किया 51500. तो कितना बाकी रहा लेने का? 50,000. सो नाउ आई थिंक यू अंडरस्टैंड यहाँ पर 51500 क्यों नहीं आया, 50,000 क्यों आया. क्लियर?
अरे डियर, वो डिस्काउंट तो सेकंड एंट्री में है, जब उसने डिस्काउंट करवाया बैंक में, उसने ये बैंक में डिस्काउंट करवाया, वो एंट्री है। बैंक में आप जाओगे डिस्काउंट करवाने के लिए, तो वहां तो बैंक डिस्काउंट लेगा ना, वो एंट्री है डिस्काउंट की डियर। 1000, 1 लाख का बिल बैंक में डिस्काउंट करवाया, तो बैंक ने चार्जेस काट लिए, बिकॉज बैंक ने पैसे जल्दी दिए। वो वाला डिस्काउंट है, रिटायरमेंट वाला डिस्काउंट नहीं है। ठीक है, ये तो रूटीन डिस्काउंट है। जब आप बैंक में डिस्काउंट करवाने जाओगे बिल, तो बैंक आपको पैसा जल्दी देगा, उसके बदले में चार्जेस काट लेगा, वो वाला डिस्काउंट है। क्लियर? यस। Okay, guys. Now, without wasting time, let's move to the very important point and very interesting point is accommodation. Now, friend, accommodation, why? To facilitate the trade transmission and for finance purpose. And for finance purpose. जब ड्रॉवर या ड्रॉई या तो दोनों को फंड की जरूरत हो, किसकी? फंड्स की जरूरत हो, फाइनेंस की जरूरत हो, they can use accommodation bill. They can use accommodation bill. Now, accommodation bill में there are 3 or 4 important points. Okay. पहला important point, यहां पर सेल परचेस नहीं होता. Okay. Now, if I share my PPT with you guys, see the first PPT. When we talks about bill, शुरुआत मैंने यहां से की थी, if you recall. A sale to B. A सेल टू बी. पहले सेल परचेस होता है, उसके बाद एक भाई साहब क्रेडिटर बनते हैं, एक भाई साहब डेटर बनते हैं, उसके बाद बीआर एंड बिल्स पेबल आता है, राइट? बट इन एकोमोडेशन सेल परचेस होता नहीं है, सीधा बिल ड्रॉ होता है. अच्छा, पर्पस क्या है? या तो ड्रॉवर का, या तो ड्रॉई का, या तो दोनों का फाइनेंस सेटिस्फाई करना है, फाइनेंस नीड. दोनों को पैसों की जरूरत है, तो दोनों का फाइनेंस नीड, फंड मैनेजमेंट करना है, दोनों को लोन देना है, कहीं से फंड मैनेज करना है. तीसरा और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? एकोमोडेशन में आपको एक रेशियो दिया होगा कि भाई जो भी पैसा फंड आया, और फंड आएगा कहां से? वो लोग क्या करेंगे, बैंक में जाके बिल को कर देंगे डिस्काउंट. मान लो कि 1 लाख का बिल है, उन्होंने बैंक में जाके डिस्काउंट करवा दिया, बैंक ने 10,000 काट के 90,000 दिए. ओके. और ऐसा बोला है कि वो पैसे 5:4 में मान लो कि शेयर करेंगे. ओके. तो उन्होंने पैसा 50,000 40,000 शेयर किया. आपको सब में या तो रेशियो डायरेक्ट दिया होगा, या तो फिर आपको सब में हिंट दिया होगा इन विच रेशियो दे आर शेयरिंग द अमाउंट. एंड बैंक ने जो डिस्काउंट काटा है, वो भी वो लोग सेम रेशियो में शेयर करें. 4 पॉइंट्स मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूं. ओके. प्लीज राइट दिस वेरी केयरफुली, फ्रेंड. Please write this very carefully. I am sharing, just a minute.
Please write this, guys. Please write this important points first. Then we will start the question. Please write this very important 4 points. Very important 4 points. Then, guys, okay. Now, friend, how they draw the bill, how they share the money after they discount the bill with the bank, and how they give back money to the bank. This all entries we need to understand. Right, guys? Okay. Let's start with the example. Now, friend, 9, 10, both are of accommodation. Yes. 9 and 10 both are of accommodation. Okay.
9, no, not 9. 9 is a routine question. 10 is accommodation. Okay. Let's complete 10. 5. X draws on Y a bill of exchange for rupees 30,000. So X draws on Y. So we can say X is a drawer and Y is a drawing. Simple, guys. X draws on Y. So X is a drawer and Y is a drawing. Now, what is asked in a question? If you read it, give the journal entries in the books of X and Y. So X is a drawer. We need to pass entry in both the books. Let's first pass in the books of X. Now, friend, X draws a bill on Y for 30,000 on 1/4/22 for 3 months. Okay. So X draw on Y. So X drawer है guys. Simple. First entry is BR to Y. First entry is BR to Y. Very simple, 30,000 because bill is of 30,000. Done, guys. Can we go further? Okay. Y accept the bill. Send it back to X. Who discount for 28,800. Right? X is a drawer. हमने सीखा था कि जो ड्रॉवर होता है, ड्रॉवर है has 4 options. If you recall our first lecture, जहां हमने समझा था कि जो ड्रॉवर होता है उसके पास 4 ऑप्शन होते हैं. Drawer can hold the bill. Drawer can discount the bill with the bank. Drawer can endorse the bill to C. Drawer can send the bill for collection, which is known as say BSFC. Right? हमने 4 ऑप्शन सीखे थे हमारे एंट्रीज के वक्त. यहाँ वो डिस्काउंट करवा रहा है. तो गाइज राइट वेरी केयरफुली. डिस्काउंटेड मीन्स ऑलवेज विथ बैंक.
always with bank. So what X did? X ने क्या किया? On same day. On same day, X discount this will with bank. So what will happen? X will give the bill to bank, and against that bank will give money to X, right? X क्या करेगा? बिल बैंक को देगा और बैंक उसको सामने पैसा देगा. तो X के पास पैसे आएंगे फ्रेंड. सिंपल. पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे. कितना पैसे आ रहा है? 28,800. ये जो बिल है उसको रिवर्स करेंगे फ्रेंड. 30,000, राइट. और जो दोनों का डिफरेंस आया वो पैसा बैंक ने डिस्काउंट चार्जेस काट लिया. इट इज एक्सपेंसेस. So you can say this bill is reverse here. So this bill is reverse here and discount is there. Clear friend? Can we go further? Yes, बिल्कुल सही. When I was explaining question number 8, somebody was asking me, सर ये डिस्काउंट कहाँ से आया, राइट? तो आई होप अभी उनको पता चल गया होगा कि जब बैंक से हम बिल डिस्काउंट करवाएंगे तो बैंक जो पैसा कम देगा हमें, इट इज नोन एज डिस्काउंट. लाइक इन दिस क्वेश्चन 1200. आई होप नाउ इट इज क्लियर, राइट? Okay. Now what happens? See, X immediately remit. Please write guys, please write, please write. रेमिट का मतलब होता है सेंड. एक्स ने वाई को 9600 सेंड किया. एक्स ने वाई को 9300 सेंड किया. अब थोड़ा ध्यान से देखना, प्लीज बी कॉन्सेंट्रेट गाइस, प्लीज. याद रहे यहां क्या लिखना है? एक्स रेमिट का मतलब होता है सेंड. 9600 टू वाई. एक्स ने वाई को पैसे भेजे. सी, you are not supposed to mug up the entries. You just understand. It's logical. मुझे बताओ कि एक्स वाई को पैसा सेंड कर रहा है, राइट? और हम ये सारी कहानी एक्स के बुक में लिख रहे हैं, ड्रॉवर के बुक में.
राइट। हम ये सारी कहानी एक्स के बुक में लिख रहे हैं। एक्स ने वाई को पैसे सेंड किए, तो जाहिर सी बात है कि एक्स के पास से पैसे जा रहे हैं, तो व्हाट लॉजिकली ही विल एंट्री वाई टू बैंक, राइट। कितने पैसे दे रहा है वो? 9600। पहले यहां तक कहानी क्लियर गाइस? पहले ये बताओ, यहां तक कहानी क्लियर? उसने वाई को 9600 सेंड किए। राइट। राइट गाइस, यहां तक? ओके, नाउ अगर वाई एक्स वाई को पैसा दे रहा है, तो हमने भी सीखा था वो पीपीटी में। लेट मी शेयर पीपीटी वंस अगेन, इंपॉर्टेंट पीपीटी वंस अगेन। क्या लिखा था यहां? द मनी इज शेयर्ड बिटवीन बोथ द पार्टीज इन एग्रीड रेशियो एंड डिस्काउंट इज ऑल्सो शेयर्ड बिटवीन पार्टीज इन सेम रेशियो। जिस रेशियो में मनी शेयर करेंगे, उसी रेशियो में डिस्काउंट शेयर करेंगे। क्लियर? राइट। लास्ट 2 पॉइंट्स। जिस रेशियो में मनी शेयर करेंगे, उसी रेशियो में डिस्काउंट शेयर करेंगे। ओके, नाउ फ्रेंड, ओके, लेट्स अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। सी, एक्स discountable and received 28,800, and from this X sent to Y 9600. राइट गाइस? सो आप बता सकते हो रेशियो कितना आया? नाइन्टी सिक्स हंड्रेड दे दिए, तो खुद के पास कितने रखे उसने? वी कैन से लाइक दिस,
सो 28,800 आए थे, राइट। उसने y को दे दिए 9,600, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये खुद के पास रखे, तो x के पास बचे 19,200 और y को मिले 9600। तो क्या रेशियो हुआ दोनों के बीच में? व्हाट इज द रेशियो बिटवीन x एंड y? पैसे उन्होंने ऐसे शेयर किए, सिंपल। तो व्हाट इज द रेशियो बिटवीन x एंड y? व्हाट इज रेशियो बिटवीन x एंड y? यस। yes, you can say it is one third, it is two third, ratio is 2:1, it is one third of total and two third of total. Ratio is 2:1 guys, clear? यहां तक कहानी क्लियर? 2:1, वन थर्ड दे दिया, टू थर्ड खुद के पास रखा, राइट? क्लियर गाइस? सो डिस्काउंट का भी टू थर्ड देना पड़ेगा। ये डिस्काउंट टोटल है 1200, राइट? टू थर्ड, वन थर्ड, 800, 400, एक्स एंड वाई, सिंपल गाइस। सो वाई कितना बेयर करेगा? 400 बेयर करेगा वाई, सेम रेशियो में, ओके। सो सी, नाउ सी केयरफुली गाइस, दिस इज टोटल डिस्काउंट, राइट? दिस इज टोटल डिस्काउंट। From this is debited in X book. Okay. From this, we need to pass 400 to Y. Right, guys? From this 1200, okay, we will pass 400. And now total is 10,000. Please write carefully. Please write carefully. From this 1200, as we discussed, from this 1200, Y will bear 400. So X will transfer discount 400 to Y. So 9,600 plus 400. So it will be 10,000. It will be 10,000. Write it very carefully. Yes. Write carefully, guys. This 10,000 is not given in question. Write very carefully. This 10,000 is not given in question. 9,600 bank credit, 400 discount credit, and total is 10,000.
and total is 10,000. Write very clearly, guys. Write very clearly. Clear? Can you go further, friends? Okay. Now what happened? See, here. On due date, X being unable to remit the amount due, accept the bill of 42,000 for 3 months. For 3 months. Now on due date. On due date means the date of drawing is 1st April 22. 3 months. Right, guys? 1/4/22 plus 3 months plus 3 days. One 4/22 plus 3 months plus 3 days. We are talking about 4 July, right? We are talking about 4 July. Yes. Now what happened on 4 July? What happened on 4 July? X should pay remaining money. See, X being unable to remit the amount due. X could not pay. X could not pay remaining amount. So first of all, right, guys, just understand here. Here, I am explaining here, right? The bill is of 30,000, right? The bill is of 30,000. Now you can say from 30,000, X paid 1/3 to Y, that is 10,000. And 20,000, that is 2/3 is due to pay. First, write this very categorically. Write this very categorically, guys. 30,000 का बिल था. हमने अभी रेशियो क्या सीखा? अभी रेशियो सीखा 2/3 1/3. उसने 1/3 पे कर दिया था, 2/3 पे करने का बाकी था. और देखो ये 10,000 यहाँ लिखा है. Y को 10,000 पे कर दिया, अभी एंट्री में लिखा हमने. So we can say 1/3 paid. 1/3 paid. So 30,000 में से 1/3 पे कर दिया था, 2/3 पे करने का बाकी था, बट वो 2/3 पे नहीं कर पाया. कौन? X बाकी का 2/3 पे नहीं कर पाया. तो अगर X पैसा नहीं पे कर पाएगा तो उसको बिल एक्सेप्ट करना पड़ेगा. बहुत सीधी सी बात है. Y बोलेगा भाई या तो पैसा दे या तो फिर मेरा बिल एक्सेप्ट कर. तो X ने बोला भाई पैसा तो नहीं है, देखो यहां लिखा है.
On the due date, X being unable to remit the amount due, accept a bill of 42,000 for 3 month. For 3 month. तो अब पहले क्या किया था, एक्स ने बिल ड्रॉ किया था. सी, नाउ सी, द एंटायर गेम इज चेंज. देखो, एक्स ने क्या किया था, बिल ड्रॉ किया था, राइट, ड्रॉ किया था. सी, देखिए, ड्रॉ किया था ना. अभी वो क्या करेगा, बिल को एक्सेप्ट करेगा, बिकॉज पैसा नहीं है उसके पास. उसके पास पैसा नहीं है. एक्स कैन नॉट पे this 20,000, and therefore X accept the bill. X accept the bill. Write very carefully, guys. अगर एक्सेप्ट करेगा तो उसके लिए बिल्स पेबल होगा. क्लियर गाइस? वाई टू बिल्स पेबल? क्लियर? वाई टू बिल्स पेबल? वाई टू बिल्स पेबल? 3 days always added. It's a rule. 3 days of grace is always added. So X को बाकी के पैसे देने चाहिए थे on 4 जुलाई, but X could not pay the money. सो देयर इज ओनली वन ऑप्शन. वाई बोलेगा देखो भाई पैसा नहीं है, तो फिर मैं बिल ड्रॉ करूंगा, तो एक्सेप्ट कर ले, फिर मैं मेरे हिसाब से कुछ कर दूंगा. सो अब एक्स जो ड्रॉवर था वो बन जाएगा ड्रॉइंग. एकोमोडेशन में ऐसा ही होता है. अगर एक भाई साहब पैसा पे नहीं कर सकते हैं तो रोल हो जाएगा रिवर्स. तो रोल हो जाएगा रिवर्स. 42,000 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, दैट्स व्हाई इट कैन बी एनी अमाउंट. 42, 45, 52, 50, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, एनी अमाउंट. अमाउंट का कोई लॉजिक नहीं है. वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 42,000, इसलिए मैंने लिखा हुआ है. बाकी अमाउंट का कोई लॉजिक नहीं. नाउ X being unable to remit the amount except bill of 42,000 for 3 months, which is discounted by the bank by Y for 40110. ये बिल किसने डिस्काउंट करवाया? Y ने. किसने डिस्काउंट करवाया? Y ने. अभी हम किसके बुक में एंट्री पास कर रहे हैं? X के बुक में. Y डिस्काउंट करवाएगा तो Y को पैसा मिलेगा. वाई डिस्काउंट करवाएगा तो वाई को पैसा मिलेगा. हमें कुछ नहीं करना है. तो हमने बिल एक्सेप्ट कर लिया. वाई डिस्काउंट दिस बिल. वाई डिस्काउंट दिस बिल. अगर वाई डिस्काउंट करेगा फ्रेंड, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड. नो एंट्री.
Why it is, write the very carefully guys. Why discount is bill with the bank? No entry required in X book. X के बुक में इसकी कोई एंट्री होती नहीं. वाई ने डिस्काउंट करवाया, वाई को पैसा मिलेगा, एक्स के बुक में कुछ नहीं आएगा. बट अब जो आएगा इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज वाई सेंड 67402 एक्स. सी, वाई सेंड 67402 एक्स. याद रहे कि एक्स एंड वाई दोनों पार्टनर है. एक्स ड्रॉअर हो के वाई ड्रॉई हो, कोई फर्क पड़ता नहीं. बैंक से जो पैसा मिलेगा वो दोनों को शेयर करना है, वो दोनों को शेयर करना है. ओके. अब वाई ने बिल डिस्काउंट करवाया 40,110 में, पैसे वाई को मिले. तो रूल क्या कहता है, जब पहला वाला बिल था 30,000 वाला बिल, जो एक्स ने डिस्काउंट करवाया था 28800 में, हमने जो आगे एंट्री लिखी ये वाला बिल, फर्स्ट वाला. तो एक्स ने वाई को पैसे दिए थे ना, देखो ये पैसे हमने सीखे कहां से आए थे. 2800 इंटू 1/3, डिस्काउंट 1200 था, इंटू 1/3. राइट. तो सर एक्स के पास जब पैसे आए थे, एक्स ने वाई को पैसे दिए थे, तब वाई ने बिल डिस्काउंट करवाया, तो वाई एक्स को पैसा देगा. कितना पैसा दिया, 6740. ओके. एक्स के पास पैसे आ रहे हैं. नाउ सी द लास्ट एंट्री गाइस. Be very careful guys, be very careful. Y send cash 6740 to X. Y send cash 6740 to X. फिर से एक बार, ये कहानी X की बुक में है, X को पैसे रिसीव हो रहे, तो X डेबिट करेगा, लेकिन हमने सीखा था कि सर जो डिस्काउंट होगा वो एक्स एंड वाई 1:3 में शेयर करेंगे. तो जैसे ये डिस्काउंट हमने गिना था फ्रेंड, मैंने आपको ये पूरी कहानी समझाई 1200 वाली, ये रहा. 800 एक्स ने बेर किया था, 400 वाई ने बेर किया था. और जब हमने वाई को पैसे दिए, यहां पर देखिए, जब हमने वाई को पैसे दिए तो हमने उसको पैसे भी 1/3 दिए थे, और डिस्काउंट का भी 1/3 पास ऑन किया था. ये डिस्काउंट का 1200 का 1/3 पास ऑन किया था. अब मुझे पहले ये बताओ कि जो दूसरा वाला बिल है, ध्यान से, दूसरा वाला बिल जब वाई ने बैंक से डिस्काउंट करवाया, तो बता सकते हो कि बैंक ने कितना डिस्काउंट काटा. सब यहां दिख रहा है आपको स्क्रीन पे. बता सकते हो कि जब वाई ने सेकंड बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया, तो बैंक ने कितना पैसा दिया और कितना डिस्काउंट काट लिया. टेल मी, व्हाट इज द डिस्काउंट ऑफ सेकंड बिल? व्हाट इज द डिस्काउंट ऑफ सेकंड बिल? Yes guys, what is the discount of second bill? What is the discount of second bill? जो वाई ने डिस्काउंट करवाया, उसमें कितना डिस्काउंट बैंक ने काटा?
यस गाइस, वेरी नाइस। 1200 नहीं आएगा, वो तो पहले बिल का है, कुछ भी लिखते हो यार। 1890। वेरी गुड गाइस, वेरी गुड। परफेक्ट, परफेक्ट, वेरी गुड। ओके, कहाँ से आएगा? मैं लिखता हूं यहाँ पर गाइस। जगह जिस तरीके से होगी वैसे लिखेंगे। ओके, यहाँ जगह है। सो जो सेकंड बिल है वो 42,000 है। ओके, बैंक गिव 40,110 इज डिस्काउंट। कौन बेर करेगा? एक्स एंड वाई। रेशियो क्या है? 2/3 1/3। रेशियो डज नॉट चेंज। रेशियो डज नॉट चेंज। बता सकते हो कौन कितना बेर करेगा गाइस? कौन कितना बेर करेगा? टेल मी गाइस, कौन कितना बेर करेगा? एक्स कितना बेर करेगा, वाई कितना बेर करेगा? यस, कौन कितना बेर करेगा? ये भाई साहब बेर करेंगे 1260। राइट। और ये भाई साहब बेर करेंगे 630। क्लियर गाइस? ओके। अब मुझे बताओ कि अभी जो एंट्री पे हम है, ये एंट्री, तो कौन किसको पैसा दे रहा है? हम जिस एंट्री पे रुके रुके हुए हैं, कौन किसको पैसा दे रहा है? इन विच एंट्री वी आर, कौन किसको पैसा दे रहा है? अभी हम जिस एंट्री में रुके हुए हैं यहां पर, वाई एक्स को पैसा दे रहा है गाइस। इफ वाई इज पेइंग टू एक्स, if y is paying to x will receive money, and x also has to bear the discount of 1260. Clear? Clear guys? And what is total? We have to write in entry 6740 plus 1260, that is 8,000. So write very carefully guys. This 8,000 is a total of these two. This 8,000 is total of these two. Write very clearly. X is paying to Y is paying to X. Yes. So if X is receiving money, he has to bear discount also. If X is receiving money, he has to bear discount also. Clear guys? Write very carefully. Once again, 8,000 is not given in question. We find it 8,000. 6740 plus 1260. Clear? Okay. And the last line of the question. Before the maturity of the bill, X become bankrupt. Bankrupt means insolvent. His estate paying 50%. Okay. कौन इंसॉल्वेंट हो रहा है? एक्स हो रहा है।
एक्स, हम किसकी बुक में लिख रहे हैं? एक्स, वी आर राइटिंग एंट्री इन द बुक्स ऑफ एक्स, एक्स बिकम इंसॉल्वेंट. So the person in his book we are writing entry become insolvent. And we understand that when somebody become insolvent, first of all, bill should be reversed. Now guys, first bill is already reversed. Forget about the first bill. Only now second bill. This is second bill. Y2 bills payable. This is second bill. Okay. First bill is already gone. Now this bill should be reversed first. This bill should be reversed first. So हमने सीखा है guys, insolvency. In case of insolvency, first of all, bill should be reversed. First of all, bill should be reversed. Please write very carefully. First of all, bill should be reversed. And guys, please write carefully. First bill is already reversed. So now we are reversing this bill. This bill we are reversing. This bill we are cancelling. Okay. Bills payable to Y. And last entry is cancel the party. First of all, bill is cancelled and now cancel the party. Now friend, who is becoming insolvent? X. See once again. Before date of maturity, X becomes bankrupt. X become insolvent. So, write very carefully. X become insolvent. X become insolvent. Therefore, X will cancel account of Y in his book. Write very carefully, guys. X become insolvent. सो वो क्या करेगा? अपनी बुक्स में से Y को कैंसल करेगा. Y को क्या करेगा? कैंसल करेगा. सो नाउ फ्रेंड, ऊपर की जितनी भी एंट्रीज हमने लिखी है, सारी एंट्री में जहां जहां Y आता है, दैट वी हैव टू कंसीडर. दैट वी हैव टू कंसीडर. सो जहां जहां पर Y है, मैं वहां राउंड कर रहा हूं. ठीक है, देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से.
मैं राउंड कर रहा हूं गाइस। सबसे पहले y 30,000, राइट, क्रेडिट। फिर y 10,000 डेबिट। 30,000 क्रेडिट एंड 10,000 डेबिट। मैं यहां लिख रहा हूं y credit 30,000 first entry, y debit 20,000 in second entry. Okay. Fine. Now guys, this entry is already reverse. Y2 bills payable. I am cancelling this because see, this entry is reverse. See, I am cancelling both of this because this entry is reverse. Y2 bills payable, bills payable to Y. So I'm not counting this. And here Y is credit by 8,000. Credit. So what is the final net of friend? This is debit, I can minus. It is 10,000. It is 10,000. Right, guys? So final balance is 28,000. Right? 30,000 credit, 10,000 debit. So 20,000 credit plus 8,000. So 28,000. Okay. So final balance is 28,000 credit. I have to cancel it. So I will debit y by 28,000. Please write carefully, guys. Please write carefully. मुझे y को कैंसिल करना है. So y 28,000 क्रेडिट है, मैंने उसको डेबिट कर दिया. y डेबिट 20,000, तो y इज कैंसिल. So in my book y is cancel. यहां तक कहानी क्लियर गाइस. y 28,000 से कैंसिल कर दिया, तो अब x की बुक में y जीरो है. अब x की बुक में y जीरो है. अब x की बुक में y जीरो है. क्लियर गाइस. Can we conclude the last entry? Okay. What x has done? He pay only 50%. He paid only 50%. So to bank 14,000, and deficiency 14,000. हमने सीखा था कि जो पैसा पे नहीं करेंगे, इट विल क्रेडिट टू डेफिशिएंसी.
50 percentage paid and 50 percentage could not pay. So 15 percentage, 50 percentage 14,000 बैंक में पे किया और रिमेनिंग पे नहीं कर पाए, सो डेफिशिएंसी. Yes, money not paid by X should be credited to deficiency. So write very carefully guys, 28,000 कहां से आया एंड 28,000 क्रेडिट बैलेंस बचा है तो उसको डेबिट करके जीरो करना पड़ेगा एंड 50 परसेंटेज पेड एंड 50 परसेंटेज नॉट पेड. Clear guys? Can we conclude the last small point of chapter that is called due date? Can we guys, can we switch over to the last point of chapter that is due date calculation? Due date calculation. So guys, this is accommodation, and accommodation you have to read very carefully, right? So we need to read each and every point, then only we can do this. Okay. And now we need to complete the small portion called due date calculation. It's only a theory point. It's only a theory point, guys. Okay, how to calculate due date. Now, please go to the page number 6.8. Please, on page number 6.8, please, guys. Please write first important point
if bill is after site and if bill is after date. If bill is after site, start calculation from date of acceptance. And here start calculation from date of drawing. So first of all, write this very carefully. If it is bill, if it is bill after site, then start calculation from date of acceptance. Otherwise, from date of drawing. Giving you 1 minute, guys. Please write this first of all. Now, Brad, how it affect the calculation? Okay. So if it is said that your bill is after site, then start from date of acceptance, otherwise date of drawing. Very simple. Somebody is asking me since my first lecture, sir, why this 3 days? This 3 days of grace needs to be added every time. This 3 days of grace needs to be added every time. Okay. Now, if your answer is public holiday, then preceding, remember, preceding, that is previous day should be taken. Previous day should be taken. And if your answer is emergency or sudden holiday, next that is
फॉलोइंग डे शुड बी टेकन. आपका आंसर जो भी आए, वो अगर पब्लिक हॉलीडे है, वो अगर पब्लिक हॉलीडे है तो आपको प्रीवियस डे लेना है. और वो अगर इमरजेंसी या तो सडन हॉलीडे है तो आपको नेक्स्ट डे लेना है. नाउ फ्रेंड, प्लीज राइट वेरी इंपॉर्टेंट, विच आर पब्लिक हॉलीडे. 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, 1 मार्च and all Sunday. These are our public holiday. These are our public holiday. अगर 3 days ग्रेस के ऐड करने के बाद ये आंसर आता है, then it should be change. We should consider previous day. So new answer will be 14 August. New answer will be 25 January. New answer will be 1st October. New answer will be 31st March. New answer will be Saturday. So this should be changed. Your answer will change. Public holiday. Yes. 2nd October, 1st April is a bank holiday. 2nd October is a Gandhi Jayanti. 15 August and 26 January आपको पता है, समझाने की जरूरत नहीं. Then your answer will change. And the last point is bill at site. What is the meaning of bill at site? So please remember, no time is mentioned. मतलब इस बिल में no days और no months are mentioned. No time, इसमें कोई टाइम लिखा नहीं है. एक्स ने वाई के ऊपर बिल ड्रॉ किया, लेकिन 1 महीना, 2 महीना, 30 days, 45 days कुछ भी लिखा नहीं है. अगर कोई टाइम फ्रेम नहीं लिखा तो उसको क्या बोलते हैं? बिल एट साइट. आफ्टर साइट नहीं, एट साइट. एट साइट. टाइम पीरियड इज नॉट मेंशन. ओके, तो इसका मतलब क्या होता है? इट इज नोन एज ए, इट इज पेबल ऑन डिमांड. इट इज पेबल ऑन डिमांड एज पर विश ऑफ ड्रॉवर. Please write carefully. It is payable on demand as per wish of drawer. As per wish of drawer. X ने Y के ऊपर बिल ड्रॉ किया,
ओके, एक्स ने उसमें कोई पीरियड लिखा नहीं है, 1 महीना, 2 महीना, 15 दिन, 20 दिन, 50 दिन कुछ लिखा नहीं है। अगर पीरियड नहीं लिखा है तो क्या कहलाता है? बिल एट साइट। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बिल एट साइट? तो इसका मतलब होता है कि जैसे ही वाई एक्सेप्ट करेगा, एक्स ये पैसा अपनी फुर्सत से एज हिज विल कभी भी मांग सकता है। क्या लिखा मैंने? बिल इज पेएबल ऑन डिमांड एज पर विश ऑफ ड्रॉवर। ड्रॉवर चाहे तो पैसा आज मांगे, ड्रॉवर चाहे तो पैसा कल मांगे, ड्रॉवर चाहे तो पैसा 5 दिन के बाद मांगे, 50 दिन के बाद मांगे, 3 महीने के बाद मांगे, एज पर विश एंड विल ऑफ ड्रॉवर। सो बिल एट साइट, write only 2 sentences. No days, no month are written. It is known as bill payable on demand. मतलब ड्रॉवर कैन आस्क और डिमांड दिस मनी फ्रॉम ड्रॉई as per his own will and wish. No time frame is mentioned. No time frame is mentioned. Clear, guys? So it's a very small concept. And one more and last important point is, guys, अगर बिल एट साइट है, अगर बिल एट साइट है जिसमें पीरियड लिखा नहीं है, सो यहां आप लिख दो गाइस, 3 days ऑफ ग्रेस आर नॉट एडेड। सिंपल सी बात है गाइस, समझाऊं नहीं तो भी चलता है। अगर इसमें डेज नहीं लिखा, टाइम ही नहीं लिखा, ना डेज लिखा है ना मंथ लिखा है, तो इसमें 3 days ऐड करते नहीं है। सिंपल सी बात है वो तो। 3 days ऑफ ग्रेस आर नॉट एडेड, आर नॉट एडेड। सो गाइस, अगर बिल आफ्टर साइट है, शुरू शुरू करोगे डेट ऑफ एक्सेप्टेंस से। अगर बिल आफ्टर डेट है, शुरू करोगे डेट ऑफ ड्रॉइंग से। 3 दिन ऐड करना कंपलसरी है। अगर 3 दिन ऐड करने के बाद आपका जो आंसर आता है वो पब्लिक हॉलीडे है, तो आपको प्रीवियस डे कंसीडर करना है। अगर वो इमरजेंसी हॉलीडे है तो आपको नेक्स्ट डे कंसीडर करना है। पब्लिक हॉलीडे का लिस्ट मैंने यहां दे दिया, दिस इज लिस्ट ऑफ पब्लिक हॉलीडे। अगर ये आंसर आए तो उसके पहले वाला आंसर कंसीडर करना है। और अगर सब में लिखा है कि जो आंसर आया वो सडन या तो इमरजेंसी हॉलीडे है, तो फिर उसके नेक्स्ट आंसर को, मतलब नेक्स्ट डे को लेना है। एंड लास्ट पॉइंट, अगर बिल एट साइट लिखा है, बिल एट साइट का मतलब कि वहां कोई पीरियड, कोई टाइम फ्रेम, कोई मंथ, कोई डेज नहीं लिखा है, तो व्हाट इज डेट ऑफ मैच्योरिटी? सर, इट इज डेट ऑफ मैच्योरिटी वेन एवर ड्रॉवर डिमांड। अगर से फॉर एग्जाम्पल आज 19 फरवरी को एक्स ने बिल ड्रॉ किया, वाई ने एक्सेप्ट कर लिया, एक्स ने उसमें कोई डेज या मंथ नहीं लिखा है, पर वाई एक्सेप्ट कर रहा है, तो एक्स ये पैसा आज भी मांग सकता है आफ्टर एक्सेप्टेंस, कल मांग सकता है, परसों मांग सकता है, 1 वीक के बाद मांग सकता है, 1 महीने के बाद मांग सकता है, 2 महीने के बाद, 50 दिन के बाद, 3 महीने के बाद, जब एक्स की इच्छा हो तब मांग सकता है। और जाहिर सी बात है कि इसमें कोई डेज और मंथ ना हो तो 3 days ऐड करने होते नहीं है। आई होप नाउ दिस इज क्लियर गाइस।
So we are concluding today. Thank you for the cooperation of 15-minute extra because it was small point. Yes. So guys, I think we will now meet on 6th of March. जहां तक मुझे याद है, we will now meet on 6th of March. 6th of March, and we will start NPO, non-profit organization. Okay, guys? So thank you guys for the patience hearing. आज हमने दो क्वेश्चन किए जो लंबे लंबे क्वेश्चन थे, इंसॉल्वेंसी वाले, रिन्यूअल वाले, रिटायरमेंट वाले, प्लस आज हमने एकोमोडेशन किया जो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना पड़ता है, और बाद में छोटा सा पॉइंट किया हमने ड्यू डेट कैलकुलेशन. So you guys were very nice because you were interacting, you were answering. Thank you for the cooperation and patience hearing. So goodbye guys, have a nice time. See you on 6th of March, and we'll start non-profit organization. Yes, I forgot. I didn't forget the break. I didn't give the break because otherwise it will more 5-10 minutes. That's why. अगर रॉय ने पैसे वापस नहीं दिए तो वो डिसऑनर होता है, हमने सीखा हुआ है वो. वंडरफुल क्लास, थैंक यू डियर. ऑल कंसेप्ट आर क्लियर. थैंक यू. गुड बाय. थैंक यू, इट्स माय प्लेजर.